Okay, today exercise number 79. First question, all of you see. I hope all of you understood about what is the cuboid and cube, isn't it? Okay, then come to the next one. Find, what is the first question? Find the volume of the cuboid. Volume of the cuboid whose dimensions are length equal to 12.5 meter 5 centimeter, breadth equal to 7.8 centimeter, height equal to 6 centimeter. Clear? Then here we have to find out the volume of the cuboid. Is it correct? So we have to write the formula. First formula is very important. Come, volume of cuboid equal to volume of cuboid equal to what it is? Length multiply breadth multiply height. Yes, this is the formula. So in the question, what is the length? 12.5 centimeter. So we have to apply this okay, in the formula. Length 12.5 centimeter, 12.5 centimeter multiply, what is the breadth? 7.8 centimeter. What is the height? 6 centimeter. So here it is 6 centimeter. Nothing is there. Afterwards we have to multiply directly as it is. We know no to multiplication. Same. Here 12.5. How many decimal numbers are there here? 1 and 2. Here one decimal number. Here after decimal one number is there. Isn't it? So we have to multiply 125 multiply 78. Okay. So 125 multiply 78. What we got it? 9750. Okay. Then how many decimal numbers are there? 12. So in the answer we have to put a decimal from right side. One leave two numbers and put the decimal. So now what is the answer now? 97.50. Then we have to with this answer we have to multiply 6. So 6, what we got it? 585. 58,500 we got. Okay. So here after decimal two digit numbers are there, isn't it? So we from right side we have to leave 2 digits and we have to put the mark the decimal. Okay. So what is the answer now? 585. Okay. So 585. What it is? 585 cubic centimeter, because centimeter multiply centimeter, centimeter square multiply centimeter, cubic centimeter. Cubic centimeter means centimeter comes 3 times. Clear? Any doubt is there in that? Okay. Then cubic centimeter. You can write cubic centimeter like that, or you can write centimeter cube also. So both answer we can write. Is it clear? Then come to the second question. First question all of you clear it? Then come to the second question. Here length equal to 16 whole number 2 by 3. Breadth equal to 8 whole number 1 by 3. Height equal to 3 whole number 3 by 5. So come we have to make this mixed fraction into improper fraction. ये mixed fraction को हम लोग ऐसे बनाओगे? Improper fraction में convert करोगे. Come. Then 3 16s are 48 plus 2 50. So what it here it will be 50 upon 3. Here it will be. Then next 25 upon 3. Here 3 5s are 15. 15 plus 3 18. So 18 upon 5. ऐसे ही we have to convert it into the improper fraction. Then next we have to write here volume of cuboid equal to
length multiply breadth multiply height. If you are writing L, B, H also you have to understand. L means length, B, H stands for height. So what is the length we made here? 50 upon 3. 50 upon 3 multiply. Here it is meter. Okay, this all the measurement are given here in meter. So we have to write everywhere meter. Okay, meter multiply. What is the breadth? 25 by 3 meter. 25 by 3 meter. Then multiply. What is the height? 18 upon 5 meter. So 18 upon 5 meter. All of you clear about it? Then okay. Then come to the here you see here 5 it is the you can anyway you can any side also we can cut it. 5 50 में से हम लोग को काट सकती है. Okay. Then 5 25 में से भी काट सकती है. No problem. Okay. Here you 5 5 are 25. Okay. 5 5 are 25. यहाँ पे 3 है. How many 3s are 18? 6 3s are 18. Okay. Then again also we can cut. Here also 3 is there. No. 1 3s are 3. 2 3s are 6. Then which numbers are left? 50 multiply 5 multiply 2. So what is the answer? 5 5s are 25. 25 multiply 2. 550. Where is 500? Here one more 0 is there. No. 50. 500. What is a unit? Meter it is. So what we will write here? Cubic meter. Because this is 3 times no 1 2 meter square and cubic meter. You can write cubic meter or meter. इसमें दोनों में सबको you have to write 1 only. Okay. 500 cubic meter or meter. Okay children. Next video. Okay children, come to the second question. What is the question here? Find the volume of the cuboid. What we have to find out? Volume of the cube. Sorry. Volume of the cube. Whose edges? Edge also side. Okay. So what is here? It is given 3 1 by 3 whole number 1 by 2 meter. Okay. 3 whole number 1 by 2 meter. So here this mixed fraction we have to convert into here improper fraction. Okay. 3 2s are 6. 6 plus 1 7 upon 2. Then again if you divide you will get the decimal number. Okay. Then 7 divided by 2 equal to 3 2s are 6. Then 0.5 you will get 3.5 meter. Is it clear? How कैसे मैंने सोल्व किया समझ में आ रही है ना? तो फिर इसमें से 3 2s are 6 plus 1 7 by 2 होगा. 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 मिल जाएगा. Clear? Then now you have to write the formula. Formula is very important. What is the volume of cube? Side multiply. Volume of cube equal to side multiply side multiply side. Okay. Now here what we got 3.5 meter. Directly also you can apply it, no problem. Okay. So if we find in the decimal, convert in the decimal number, it is easy to multiply. Decimal number मिलेगा तो डायरेक्टली आपको 35 मल्टीप्लाई 35 करके लिख सकती हो. अगर आप फ्रैक्शन नंबर होगी उसको पूरी फिर भी ये बड़ा नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बना दिया. डायरेक्टली भी आपको कर सकती हो. समझ में आ रहा है ना? 3 1 by 2 मल्टीप्लाई 3 1 by 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर मैं करेगा तो मिक्सड फ्रैक्शन 7 by 2 मिलेगा. 7 by 2 मल्टीप्लाई 7 by 2 मल्टीप्लाई करेगा. 2 में से किसी नंबर पूरी कट नहीं होगी. कट नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 7 7 सर 49 49 से आंसर क्या है वो लिखना पड़ेगा. फिर 2 2 सर 4 4 2 सर 8 आएगा. तो फिर उतना बड़ा नंबर को आप उससे डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे भी आपको आंसर सेम आएगा. कोई भी मेथड्स आप फॉलो करोगे
आंसर विल बी सेम. ओके, अभी आपको 3.5 मीटर मिला, तो आपको 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर. तो आपको इसमें आपको 35 मल्टीप्लाई 35 करना, तो आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया है. 35 मल्टीप्लाई 35 व्हाट वी गॉट 1225. तो तीसरा ये 35 है, तो मल्टीप्लाई किया व्हाट वी गॉट 42,875 मिल गया. तो ये कितने क्यों यहाँ पे 3 नंबर्स छोड़ के मैंने डेसिमल लगाया? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के 1 डेसिमल है, यहाँ पे 1 डेसिमल है, यहाँ पे 1 डेसिमल. तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, आंसर जो मिलेगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा? राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट डेसिमल लगाओ. इज इट क्लियर? तो आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे 42.875. यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर में लिया हुआ है, तो वी हैव टू राइट क्यूबिक मीटर. इज इट क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल 6.5 सेंटीमीटर. वो तो आपको कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना ही होगा. ठीक है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, देन आपको यहाँ पे व्हाट इज द साइड या 6.5 सेंटीमीटर. So 6.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.5 सेंटीमीटर. तो आपको होल नंबर से 65 मल्टीप्लाई 65 करना, बट वी विल गेट 4225 you will. Okay, next 4225 multiply 65, what we will get answer 274.625. क्योंकि ये यहाँ पे भी 3 डेसिमल है, 1 2 3. समझ में आ गया? वो तो आप आंसर पे 1 2 3 नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है. So what is the answer? We got 274.625 cubic centimeter or